Dear students, Assalamu alaikum. Class 8, subject English. Today, our topic is The Bengal Sailors, written by Sarojini Naidu. Let's begin. The Bengal sailors carry looks of Bengals to sell at the fairs. The Bengals are delicate, bright, and colorful ornaments which add to the beauty of their bearers and serve different purposes at different occasions. चूड़ियाँ बेचने वाले मेलों में बेचने के लिए ढेर सारी चूड़ियाँ लेकर जाते हैं। चूड़ियाँ नाजुक, चमकीली और रंग बिरंगी होती हैं, जो कि पहनने वाले की खूबसूरती को बढ़ा देती हैं और ये मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ अगराज़ को पूरा करती। As a woman passes through the different stages of her life, from childhood to old age, the colors and designs for her bangles also change accordingly. जैसे जैसे यानी एक खतून क्या करती है, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पड़ावों बचपन से लेकर बुढ़ापे तक से गुजरती है, इसकी चूड़ियों के रंग और डिज़ाइन भी उनके मुताबिक बदलते रहते हैं. Bengal sellers are we who bear our shining lords to the temple fair, who will buy these delicate, bright, rainbow tinted circles of light, lustres, tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. Some are meet for a maiden's rest, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that clears to the limpid glory of newborn leaves. Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of her marriage fire, are rich with the hue of her heart's desire, tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. Some are purple and gold fleckered grey, for she who has journeyed through life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worships the gods at her husband's sides. Bengal sellers are we who bear our shining lords to the temple fair, who will buy these delicate, bright, rainbow-tinted circles of light, lustre tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. यानी चूड़ियाँ बेचने वाले हैं हम, जो उठा कर ले जाते हैं अपनी चमकीली ढेरों को मंदिर के मेले में. कौन खरीदेगा ये नाजुक चमकीले कोज़ कज़ा के रंगों में रंग रोशनी के दायरे, चमकीली निशानियाँ चिराग नुमा ज़िंदगियों की, शादमाब बेटियों और शादमाब बेवियों की. Some are meet for a maiden's rest, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of woodland stream. Some are aglow with the bloom that clears to the limpid glory of newborn leaves. कुछ है सही किसी कवारी की कलाइयों के लिए, चांदी रंगी और नीले जैसे धुंध किसी पहाड़ की. कुछ हैं धुली हुई कलियों की जैसी, जो देखती रहती हैं हवा पुरसुकून किनारे पर किसी जंगल की नदी के. कुछ हैं रोशन ऐसे चमक लिए, जो चिपक जाती है नए उगे पत्तों के पुरजलाल शान के साथ. यानी कुछ जो है वो चिपक जाती हैं नए उगे पत्तों के पुरजलाल शान के साथ. Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of her marriage fire, are rich with the hue of her heart's desire, tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. कुछ हैं सूरज की किरणों से तेज मक्के के पत्तों की जैसी, खेतों की जैसी. कुछ हैं सूरज की किरणों से तेज मक्के के खेतों की जैसी, यही हैं जो किसी दुल्हन के लिए उसकी शादी वाली सुबह पर. कुछ हैं उसकी शादी के अग्नि की पलटों की जैसी, या फिर उसके दिल की ख्वाहिश के रंग में शराबोर.
کھنکھناتی چمکیلی نازک اور صاف، اس کے دلہنوں والی حصے اور دلہنوں والے آنسوؤں کی جیسی، یعنی کون؟ چوڑیاں. Some are purple and gold flecked grey, for she who has journeyed through life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household and fruitful bride, and worships and the gods at her husband's sides. یعنی کچھ ہیں بینگنی اور سنہری نقطے والی بھوری، اس کے لیے جو کر چکی ہیں زندگی کا آدھا سفر، جس کے ہاتھوں نے ہے پالا، جس کے پیار نے دی ہے مبارک، اور جلایا ہے سندر بہنوں کو، جس نے اپنے وفادار چھاتی پر، اور خدمت کرتی ہے جو اپنے کنبے کے نتیجہ خیز فخر کے ساتھ، اور کرتی ہے دیووں کی پوجا بیٹھ کر اپنے شوہر کے بغل میں. تو اس میں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں، ان کے بھی معنی آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ہے ایک ورڈ ٹنٹڈ. ٹنٹڈ کا مطلب ہوتا ہے رنگ میں رنگی. لوسٹرس کہتے ہیں چمکیلے کو. ریڈینٹ کہتے ہیں روشن کو. بڈس کہتے ہیں کلیاں. کلیوز کہتے ہیں چپک جانا. لمپڈ چمکیلی. ٹینڈر ملائم. برائڈل دلہن. چیرشڈ ہو گیا پالا پوسا. اس کے بعد ہے بلسڈ مبارک دینا. پرائڈ کہتے ہیں غرور کو.